सर अगर टाइम इतना कम होता है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड 10 किस तरह आएगा और 2 किस तरह आएगा एरिया के हिसाब से।
Yes. Nah.
सर इसको सर इंटीग्रेट करेंगे। और इसके सर जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स होंगे उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 से इंफिनिटी तक तो। यस सर।
Of course, if it's a higher order system, no matter how you do it, no matter आप उसको 10th order system को 10th first order system में convert कर लें या जितनी भी decomposition कर लें, it will still be difficult to solve that problem. I agree with that. If it's a higher order system, you can solve it without the use of computers, but it will take a long amount of time. So if it's a higher order system, it is if you have access to computers, it is always better to use a computer and solve it in a fraction of time that you will need to solve it manually. So beside the effort or the length of time, what I'm saying is that in this chapter, we are studying only first order and second order system, and we are not studying higher order system. Of course, one of the reason is higher order systems are computation intensive and they are not suitable for solution manually. Okay? That's one of the reasons. The second reason is, okay, they are not suitable for solution manually, but what if you have to deal with a third order system? And I've only taught you first and second order system. फिर क्या होगा? What will happen? ठीक है? Yes, you want to solve that problem. You don't care if it takes 10 days or 1 month, but you want to solve that problem. In that scenario, what I'm trying to tell you is that every higher order system can be decomposed into combination of first and second order system. So you do not need to understand the response of a higher order system, because you can always decompose it into first and second order system and gauge the response of the system based on the individual decomposed system. ठीक है? जो क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि सर अगर हम किसी भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर या सिंपली 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, देन व्हाई डू वी स्टडी सेकंड ऑर्डर सिस्टम? सिर्फ हमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम स्टडी करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, किसी थर्ड ऑर्डर सिस्टम को हम 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, किसी 10th ऑर्डर सिस्टम को हम 10 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं. देन व्हाई डू वी स्टडी सेकंड ऑर्डर सिस्टम? ठीक है? डज एनीवन नोस द आंसर टू दैट? स्टूडेंट्स, सर हर एक सेकंड डिग्री को सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, कुछ मतलब इमेजिनरी रूट्स से हो सकते. Very good. That's the answer. That is the answer. बिल्कुल 100% correct. See, if you have a second order polynomial of this form, very good. If you have a some second order polynomials can be decomposed into first order polynomial. Other cannot be without going into imaginary roots. Okay? So for example, if I have a system of this form, let's suppose I have a g of s is equal to 1 over s square plus 3s plus 2. Now, of course, it can be factorized. The denominator, the characteristic polynomial, can be factorized as s plus 1 into s plus 2, or I can write it as so this will be my transfer function, 1 over s plus 1 into s plus 2, or I can simply write it as 2 transfer function, 1 over s plus 1, and output of 1 over s plus 1 is input to 1 over s plus 2. Okay? So for this kind of a polynomial where the roots are real, okay, we can decompose it into 2 first order system. But if the roots are imaginary,
The roots are complex. For example, so if b square is b square minus 4ac, so b square, so let's suppose I make it 10. If it is 10, then the roots, now in this particular case, if I use quadratic formula, then s is equal to minus b, which is minus 3 plus minus under root 9 minus 4 1 into c की value 10 है, divide by 2 where a value is 1. ठीक है? In this case it becomes minus 3 plus minus under root 9 minus 40 divided by 2, or it is equal to minus 3 plus minus under root 31 minus 31 divided by 2a or 2, or it comes out to be, so 31 का under root अगर हम देंगे, it is 5.567. So this comes out to be S1 comma 2. Two roots will be minus 3 by 2, which is equal to 1.5, ठीक है, plus minus 5.567 divided by 2 iota. ठीक है? Now since the roots are complex, that means that the response of this system cannot be represented by combination of first order system, क्योंकि first order system में कभी भी oscillation नहीं होती. ठीक है? This iota part, this imaginary part, is responsible for oscillation of the response. A first order system, since first order system root can never have iota. मिसाल के तौर पे first order system क्या है? 1 over s plus 47. That means that our pole or root of the denominator polynomial s is equal to minus 47. There is no way for a first order system to have complex roots. ठीक है? Does everyone agree? किसी student को शक है? Do you have any example where you have a first order polynomial with a complex root? किसी को शक है इस बात में कि या किसी के पास proof है? Who can give me an example with a first degree polynomial whose roots have iota? किसी के पास है ऐसे कोई example, students? No, sir. ठीक है? So first order system roots can never have complex number in it. That's why, and now here's the important thing about the response of the system. If the roots of the characteristic polynomial have complex value, means if the roots of the characteristic polynomial, जिसे हम poles कहते हैं, if the poles have complex values, that means that the system response will be oscillatory response. It will be oscillatory response. चाहे आप उसको step input दे दें, उसका response जो है oscillatory होगा. So let me explain this thing a little bit further. Okay, let's suppose I have this system, mass with f of t, x of t, c, and k. Let's suppose I have this system and I apply certain force to it. ठीक है? Now the system, let's suppose the system is this. Let's suppose the system is this. G of s is equal to 1 over s square plus 3s plus 1. Now the roots of this system, the two roots or the two poles of this system, P1 is equal to, ठीक है? The two poles are 1 over
s plus 1 and s plus 2. Sorry, this will be 2. So the two poles P1 is equal to minus 1 and P2 is equal to minus 2. Now we have two poles, minus 1 and minus 2. Since the poles are real numbers, there is no imaginary part. I mean, they are not complex number. The imaginary part is 0, so it's a real number. Since the poles are real number, therefore, if I give to this system, if I give a step input to this system, let's suppose this is my step input, f of t, the response x of t for this system will be something like this. ठीक है? ठीक है? यहाँ तक clear है? This is the response x of t. अच्छा. Now imagine that I have the system is this thing. Now if I solve this, now for this particular system, पिछले केस में हमने मेरे ख्याल में इसी को ही solve किया है. The poles P1 is equal to 5.67 divided by 2 से हमारे पास आता है 2.783. So the two poles S1 is equal to minus 1.5 plus 2.783 iota, और S2 जो है that is equal to minus 1.5 minus 2.783 iota. ठीक है, ये हमारे पास दो पोल्स आ गए. Now in here कहाँ पर थे? Not here. Here. Now, if for this particular case, now the roots.
Sir, because we can decompose the higher order into the first and second order systems. That's why we didn't study the higher order systems. If we have higher order system that we can solve by using softwares and computers. So damped response, undamped response, critically damped or overdamped response.
Yes, sir. Yeah.
Yes, sir. Clear. करना चाहते तो मैथमेटिकली तो आसान है मैथमेटिकली क्या है अंडर रूट के और एम ठीक है मैथमेटिकली तो इस तरह से आई कैन फाइंड आउट द natural frequency of the system but if I want to physically find out the natural frequency of the system or I want to understand what is the meaning of natural frequency of the system what I'll do is that I'll remove for temporarily I'll remove the damper from the system I'll remove the damper from the system because if the damper exists in the system and I let the system oscillate then it will not oscillate with natural frequency it will oscillate with damped frequency which will be lower than natural frequency yahan tak clear hai students Yes, sir. okay okay next what I do is I provide some initial condition to this system I provide some initial condition this is one of the way of getting a natural frequency I provide some initial condition to the system by that I mean that I basically press this mass so that it moves down okay moves down I push my hand with the help of my hand I push the mass downward and then all of a sudden I remove my hand all of a sudden I remove my hand the moment I remove my hand because of the compression in the spring the mass will rebound or the spring will expand and the mass will move upward as it moves to its upwardmost position it will start moving downward and it will keep on moving up and down since there is no damper in the system and imagine that there is no air friction imagine that this mass is in the vacuum of space so this mass will keep on oscillating for the rest of eternity and the frequency of oscillation will be equal to or will be called the natural frequency of the system समझ आ रही students Yes, sir. Yes, sir. ठीक है for some other value of mass and spring for example if the natural frequency of this system comes out to be 10 hertz that means 10 times per second that there are 10 oscillations per second if it is for this when m is equal to let's suppose for some value of mass in k if the frequency of this system comes out to be 10 hertz for other values of mass in k the natural frequency will be different because the natural frequency is a function of stiffness k and mass m under root ठीक है समझ आ रही है any question regarding natural frequency No, sir. Clear हो गया. ठीक है कोई भी सिस्टम है which has stiffness in it चाहे वो झूला है चाहे वो spring mass damper है चाहे वो एक pendulum है any system if you disturb it and it oscillates in the absence of a damper it oscillates with a certain frequency
And that frequency is always function of that system, mass and stiffness. And that frequency is called natural frequency of the system. Okay? If you do not remove the damper, and then you press the mass, and then you suddenly release the mass. So you given some initial condition to the mass, initial displacement, you release the mass, it will oscillate. Now the oscillation frequency will not be equal to the natural frequency, because this oscillation is not natural oscillation. This is damped oscillation, because there is a damper present in this system. And this system frequency will be less. So initially, let's suppose the natural frequency of this system was 10 hertz, because depending on the damper value, its frequency will be less than 10 hertz. It might be 9 hertz, it might be 5 hertz, it might be 1 hertz, it might be even 0 hertz. 0 hertz किस केस में होगा? If it is critically damped or over-damped system, then it might have no oscillation at all. Even though it has a spring, it has a mass, it has some natural frequency, hypothetically, it has a natural frequency, but right now, because of the damper, its frequency, the damp frequency omega d will always be less than omega, and it will be equal or greater than 0, depending on the damping value, C key value. If the damper value is very high, then the system will not oscillate. So let's do that example. So let's suppose initially there is no damper, and we give it some initial displacement to the mass. This is initial displacement, this is time, and this is x of t, displacement of the mass. Okay. Now let's suppose this is the initial displacement x0 of 0. Okay, initial displacement. If I release this mass, of course this mass will move toward equilibrium point, and then it will undershoot the equilibrium point. Since there is no damper, then it will reach its maximum point, and then since there is no damper, it will come back to its minimum point, and since there is no damper, it will go back to its maximum point, and so on. And this oscillation from peak point to the minimum point, will continue. In the absence of damper, it will continue until the end of time. Clear, students? यहाँ तक? Yes, sir, clear. Okay. Now let's suppose, now this will be our frequency, this frequency. So this is 1 hertz. This is the time period for one complete cycle, and frequency will be equal to 1 over t के बराबर है. ठीक है? In hertz में हमारे पास frequency आ जाएगी. ठीक है? Now if I introduce a damper here, if I introduce a damper here, now what would happen there are two things will happen. First, the oscillation frequency is different than the natural frequency. The oscillation frequency is different than the natural frequency. It reduces. Now the system is still oscillating. But the frequency is lower than compared to the condition when there was no damper.
When there was no damper, then the frequency of the system was natural frequency. When we introduce a damper, okay, because of the damper, the frequency of oscillation reduced slightly. At the same time, you can see that it doesn't reaches the bottom. Similarly, the top doesn't reaches the top value. Why? क्या reason है students? So damper की presence की वजह से वो Damper की क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, यस, जो टोटल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा जो है, जो उसकी मोशन की एनर्जी है, जो उसकी पोजीशन और मोशन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसका कुछ हिस्सा डैम्पर के थ्रू सराउंडिंग को चला गया है. तो अब सिस्टम के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो पीक पोजीशन तक पहुंच सके. समझ आ रही है? जैसे पेंडुलम के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर पेंडुलम को आप शहद के अंदर डाल दें, ठीक है, तो पेंडुलम की जो मोशन की एनर्जी है वो शहद चूंकि एक विस्कस मीडियम है, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से जो पेंडुलम की मोशन की एनर्जी है वो फ्लूइड मीडियम को ट्रांसफर हो जाएगी और उसकी वजह से पेंडुलम अपनी पीक पोजीशन तक नहीं पहुंच सकेगा. और ग्रेजुअली क्या होगा कि हमारी ये ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी और इवेंचुअली जो पेंडुलम है वो खड़ा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. Student, ठीक है? Yes, sir. Now let's say I increase the damping value. Damping value मैं और भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है? आप यूं समझे कि पहले जो पेंडुलम के केस में डिस्कस करते, पहले वैक्यूम में हमने पेंडुलम को मोशन दी, ठीक है? सो पेंडुलम जो है वो हमने एक एक्सट्रीम से उसको छोड़ा, it went to the other extreme, then it came back to the same point, then it went back to the other extreme point and so on, and it keep on oscillating. क़यामत तक ये oscillate कर रहा है, ठीक है? सेकंड केस जो अभी था, हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ डैम्पिंग इंट्रोड्यूस की. हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ डैम्पिंग ऐसे इंट्रोड्यूस की कि हमने पेंडुलम को जो है पहले वैक्यूम में ऑसिलेट कर रहा था, अब जो है पेंडुलम जो है लेट्स सपोज पानी में ऑसिलेट कर रहा है, या हवा में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? नाउ in the previous case, because it was vacuum, so there was no damping, there was no transfer of energy from the pendulum to the surrounding environment because there was no friction. In the second case, when the pendulum is moving in the air, there is a friction between the pendulum and the air surrounding the pendulum. Because of that, the pendulum motion energy is transferred from the pendulum system to the surrounding air, and gradually with each oscillation the magnitude of the displacement of the pendulum reduces until after certain time the pendulum stop moving because it has lost all of its motion energy to the surrounding environment through fluid friction, air friction के through. ठीक है? That is the second case. Third case, we further increase the damping value. How do we increase? Rather than putting the pendulum in a room full of air, we put the pendulum in a room full of water. Now the water is more viscous medium compared to air. That's in this case when the pendulum is oscillating in the water medium, what happened that the pendulum is losing much more its motion energy through friction, with higher friction with the water medium. So the pendulum might move something like this. It may not cross the equilibrium point. ठीक है? It may not cross the equilibrium point because it's चले पानी की मिसाल ना लें, शहद की मिसाल लें, ठीक है? Let's suppose the room is full of honey and we let the pendulum move from one extreme point, and since the friction is so high, the viscous friction between the pendulum and the honey is so high that pendulum barely reaches the equilibrium point,
and it doesn't cross the equilibrium point. It just reaches the equilibrium point and stays there. This type of system is called critically damped system. This type of system is called critically damped system. Now, it may also be called over-damped system. Yes, you can call it. I will differentiate between critically damped system and over-damped system. An over-damped system or a critically damped system is the situation where the system response, because of very high damping, doesn't oscillate at all. ठीक है, उसमें कोई oscillation तो तब आती है ना कि when the response crosses the equilibrium point. If the response doesn't crosses the equilibrium point, that means there is no oscillation. So for a second order system in which damping value is so high that the system is unable to oscillate back and forth, पहली ऑसिलेशन में ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके रुक जाता है. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइदर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और ओवर डैम्प्ड सिस्टम. यानी क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और ओवर डैम्प्ड सिस्टम दोनों में ऑसिलेशन नहीं होती, बिकॉज द डैम्पिंग वैल्यू is so high that by the time the system reaches its equilibrium point, it has lost all of the motion energy through the surrounding medium through viscous damping or through damping. यहाँ तक clear है student? Yes sir, clear है. Yes sir. ठीक है, so हमने 3 cases अब तक पढ़े. ठीक है, एक है under damped system when there is no damping, in which case the motion magnitude doesn't decrease, there will be oscillatory motion, and the oscillatory motion amplitude doesn't decreases with successive oscillation because there is no transfer of energy from the oscillatory system to the surrounding because there is no damper. Then we studied the under-damped system where there was a small value of damping, not very high. The small value of damping was so small that the system was able to oscillate along the equilibrium point, but with each oscillation, its magnitude of oscillation or its amplitude of oscillation gradually decreased with each oscillation until after certain point, the oscillation stopped and the pendulum or the oscillatory medium came to rest. The third type of system, which is actually 2 types of system, but both of them are similar. Critically damped system and over-damped system. In critically damped system and over-damped system, the damping value is so high, then when you let the system oscillate from some extreme point, by the time the system response reaches to its equilibrium point, it has lost all of the motion energy to the surrounding through damping. ठीक है, and by the time it reaches equilibrium point, it has no more energy to cross the equilibrium point, and that's why it has no overshoot. It doesn't cross there is no oscillation. ठीक है, यहाँ तक clear है? Now let's discuss the difference between under-damped system and critically damped system. Over-damped system and critically damped system. So same example. Let's suppose I have increased the damping. Initially there was no damper, so the system had a under-damped response. Then I kept on increasing the damping until at certain value of damping it just reached equilibrium point and there was no oscillation. ठीक है? So this is called critical damping. Critical damping is the value of damper which is just enough that the system reaches equilibrium point without oscillation. यानी critical damping वो limiting damping value है. अगर ये C की बजाय मैं यहाँ पर CC डाल दूं तो सिस्टम oscillate नहीं करेगा और जो है equilibrium point को पहुंच जाएगा without any oscillation. But if I make C value
even C की वैल्यू, if I make C value even slightly less, बिल्कुल थोड़ा सा भी कम कर लूं CC से, then the system will start to oscillate. समझ आ रही है? यानी क्रिटिकल डैम्पिंग के वो मैग्नीट्यूड है, वो वैल्यू ऑफ डैम्पिंग है कि जिस पे सिस्टम जो है बस बिल्कुल उससे अगर थोड़े भी डैम्पिंग की वैल्यू कम हो जाए, मतलब इस सिस्टम के लिए लेट्स सपोज सीसी की वैल्यू 5 यूनिट है, अगर मैं सीसी की वैल्यू 5 यूनिट है, अगर मैं सी की वैल्यू यहां पर 4.9 यूज कर लूं तो इस सिस्टम का रिस्पांस अंडर डैम्प्ड होगा, मींस देयर वुड बी सम ऑसिलेशन. अगर मैं सी की वैल्यू 4.99 भी यूज कर लूं फिर भी देयर विल बी सम ऑसिलेशन. लेकिन अगर मैं सी की वैल्यू सीसी के बराबर ले लूं व्हिच इज इक्वल टू 5, देन देयर विल बी नो ऑसिलेशन. The system will simply reach the equilibrium point without crossing the equilibrium point. ठीक है सर, ये नमाज का टाइम करीब हो रहा है, अगर अच्छा थोड़ा सा ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर हम आगे वो करें, ठीक है? कब है नमाज का टाइम? सर 1 बजे, तो अभी थोड़ा टाइम अभी टाइम है ना सर, तैयारी खैर है. अच्छा खैर है. वही अल्लाह के बंदे, ये भी जो है ना आप जिहाद कर रहे हैं, तालीम पढ़ रहे हैं, ठीक है? खैर है, मैं छोड़ता हूँ, नमाज की तैयारी का वक्त होगा लेकिन अभी ये बिल्कुल दरमियान में, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं C की वैल्यू CC से बढ़ा दूं 5.5 कर दूं, तो अब क्या होगा? सिस्टम का रिस्पांस U होगा, मतलब अब ओवरशूट तो नहीं होगा, अब ऑसिलेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये जो है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहुंचने में जरा ज्यादा टाइम लेगा. समझ आ रही है इसको? इस तरह के सिस्टम को हम ओवर डैम्प्ड कहते हैं. और इस तरह के सिस्टम को हम क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट? क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अच्छा, जिनको समझ आ गई वो खुलासा करके मुझे बता दें. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस. अच्छा, कोई एक खुलासा करके बता दें. ये जो 4 सिस्टम हमने पढ़े, 4 रिस्पॉन्सेस जो हैं, अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवरडैम्प्ड सिस्टम. सर अनडैम्ड में जो होता है वो तो इनफिनिट टाइम तक उसी फ्रीक्वेंसी से जो है वो सिस्टम प्रोसीड कर रहा होता है, उसी एम्पलीट्यूड से, मतलब उसके एम्पलीट्यूड पे कोई कमी नहीं आएगी, वो ऑसिलेट करेगा और वो ऑसिलेशन उसी एम्पलीट्यूड के साथ बरकरार रहेगी अनटिल इटर्निटी, आखिर क़यामत तक. ठीक है, गुड. नेक्स्ट, अंडरडैम्प्ड कैसे होगा? अंडरडैम्प्ड ये है कि उसके मैग्नीट्यूड में जो है वो थोड़ा कमी आएगी, उसकी मैग्नीट्यूड में वो डिक्रीज होगा उसकी वैल्यू, और ऑसिलेशन होगी. मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या है? जो रिस्पांस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के को क्रॉस करेगा, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा. ठीक है, ऑसिलेशन होगी और लेकिन ग्रेजुअली ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिड्यूस होगा एंड अनटिल और एक सर्टेन टाइम पे आके जो है वो ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके रुक जाएगा पेंडुलम. ठीक है, दैट इज अंडरडैम्प्ड. क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या है सर? उसमें जो है वो एब्रप्ट जो है वो डिक्रीज होता है मैग्नीट्यूड का, बहुत जल्दी से मैग्नीट्यूड वो कम हो जाता है. आपकी बात ठीक है लेकिन वर्डिंग प्रिसाइज नहीं है. उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है, आपकी बात ठीक है कि तेजी से एम्पलीट्यूड रिड्यूस, तेजी से तो नहीं होगा, हम ये कहते हैं कि उसमें ऑसिलेशन नहीं होती और जो मास है वो एक एक्सट्रीम से, फॉर एग्जांपल पेंडुलम है ना, आप उसको एक एक्सट्रीम से छोड़ेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा.
इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, बस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के जब वो नजदीक जाएगा तो उसकी मोशन इतनी स्लो हो चुकी होगी कि बाय द टाइम इट रीचेस इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके अंदर कोई मोशन एनर्जी रहेगी नहीं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस कर जाए। दैट विल बी क्रिटिकली डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में क्या होता है सर? उसमें भी यही होता है कि इक्विलिब्रियम को क्रॉस नहीं करती और बहुत जल्दी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं सर। वो टाइम ज्यादा लेता है। गुड, ठीक है। देखिए क्रिटिकली डैम्प्ड वो सिस्टम है कि जिसमें डैम्पिंग, ये देखो ये जो चार डिफरेंस आ रहा है रिस्पांस में। देखिए हम मास चेंज नहीं कर रहे, हम स्टिफनेस चेंज नहीं कर रहे, हम कोई और चीज चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ डैम्पिंग की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सो डैम्पिंग की वैल्यू कंपेयर टू मास एंड स्टिफनेस इफेक्ट द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, के रिस्पांस के टाइप कैसे होगा। अगर डैम्पिंग बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो रिस्पांस की जो टाइप होगी वो अनडैम्प्ड होगी। अगर डैम्पिंग कम है कंपेयर टू मास एंड स्टिफनेस तो रिस्पांस की जो टाइप होगी वो अंडर डैम्प्ड होगी। अगर डैम्पिंग जो है एक खास, डिपेंडिंग, उसका फार्मूला मौजूद है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। अगर एक खास वैल्यू के बराबर है डैम्पिंग की वैल्यू, तो फिर जो है आपका जो रिस्पांस जो है इट विल नॉट ऑसिलेट, इट विल रीच द इक्विलिब्रियम वैल्यू विदाउट एनी ऑसिलेशन। बस ये इक्विलिब्रियम वैल्यू पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर आप डैम्पिंग बढ़ाएंगे, इफ यू विल इंक्रीज डैम्पिंग वैल्यू मोर देन दैट फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, व्हाट विल हैपन कि आपने और भी, आप इमेजिन करें ना, शहद से भी एक ज्यादा गाढ़ा मीडियम, जो कि शहद से भी ज्यादा गाढ़ा है, उस मीडियम में भी जब आप पेंडुलम को छोड़ेंगे, लेकिन वो इतना गाढ़ा है, इतना विस्कस है कि पेंडुलम अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके रुक तो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसको शहद से ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ओवर डैम्प सिस्टम। आप समझ आ रही है? यस। अच्छा, so let me give you an example where we would want a critically damped system, ठीक है। आप सब लोगों ने टीवी पे देखा होगा, यू probably have seen कैनन फायर, ठीक है, तोप से जो गोला मारते हैं, ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा। यस सर, ठीक है। So when the cannon fires, it recoils. You probably have seen it. It recoils. Yes sir. यस सर। ठीक है। Now imagine if the system doesn't have any damper. What will happen to the cannon when it recoils? Students? It will keep. Yeah, it will keep on oscillating. ये स्टेशनरी नहीं होगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, मतलब उससे अगला फायर आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो आगे पीछे जा रहा होगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, ठीक है। व्हाट इफ वी इंट्रोड्यूस अ स्मॉल डैम्पर, इफ वी इंट्रोड्यूस अ स्मॉल डैम्पर, सो द मोमेंट द गन रिकॉइल्स, it will reach an extreme point, then it will move towards the equilibrium point, but it will not stop at equilibrium point. It will move past the equilibrium point and then oscillate back through the equilibrium point, then oscillate forward to the equilibrium point, and after some time it will come to rest. So you will have to probably wait like 2-3 minutes for the cannon to become at rest position. Clear है यहाँ तक? Yes sir. यस सर। Okay, but what if we introduce so much damping to the system that the system is over-damped, not critically damped. If we introduce too much damping to the system, what will happen? When the gun will recoil, then it will reach its extreme point, then it will start moving towards the equilibrium point, but it will move very slowly because of very high damping. And it will take a long time before it reaches its equilibrium point, and you will still have to wait a few minutes before you can fire another round from the gun. ठीक है? यस सर। Yes sir. What will happen in critically damped system? In critically damped system, the damping value will be calculated
using a formula that will give you a certain value of the damping, and that value of damping will make the system reach its equilibrium point without oscillating, but in minimum amount of time. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. That type of system is called critically damped system. Any overdamped system will not oscillate. Any overdamped system will not oscillate. But the higher the overdamping, the higher time it will take to reach the equilibrium point. So the minimum value of damping, which will make the system not oscillate but also reach the equilibrium point at the fastest possible, is called critical damped value of the system. समझ आ रही है इस बात की? Any question? Then I'll close. सिस्टम के लिए डिजायर्ड होगा सर. हर सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है. क्रिटिकल डैम्पिंग की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है. उसका फार्मूला है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कहूँगा CC is equal to I think it is under root 2 km or something like this. नो सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये हर सिस्टम के लिए डिजायर्ड वैल्यू क्रिटिकल डैम्प होगी? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो शॉक सिस्टम है, डिजायर्ड वैल्यू जो है क्रिटिकल डैम्प्ड है, ठीक है. लेकिन अगर आप एक मिक्सचर डिजाइन कर रहे हैं, शेकर डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें तो आप ऑसिलेशन चाहते हैं, तो उसमें जो है आपके पास डिजायर्ड वो नहीं है. किसी और सिस्टम में हो सकता है आपके पास ओवर डैम्प सिस्टम हो. सो इट विल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है. बट इन लॉट ऑफ सिचुएशन, यस, there are many situations when we desired critically damped system, but it is not always possible. Yes sir. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? वाइब्रेशन के क्लियर हो गए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम. एनी क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है. क्लियर है. ठीक है. मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूँ और चलो, मेरे पास इस वक्त 38 स्टूडेंट्स हैं. आज की अटेंडेंस मैंने अभी ले ली है. और अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि साथ तनवीर. जी सर. अच्छा, आप दोनों ने जो है ना थोड़ा सा लेक्चर के बाद जो है लेक्चर के बाद आपने मेरे साथ जरा वो आपके जो इशू है